हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कविता। आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं गई थी कॉलेज। मैं सोची थी रहने दो, चलो अब मैं वीडियो वो कर लूँ, अपनी चैप्टर पढ़ लूँ, फिर मैं और भी काम करूँ। वेट अ सेकेंड। लाइफ चेंजिंग बुक स्ट्रेट, पता नहीं कहाँ छोड़ा था। आज का एपिसोड है 10th एपिसोड हो गया। आज ताली मारेंगे मेरे लिए एंड में, लास्ट में। हेडफोन लगा लेना अच्छे म्यूजिक के लिए, सॉरी म्यूजिक नहीं, अच्छे साउंड के लिए मेरे। कहाँ से पढ़ना है? हाँ, फिल्टर योर थॉट। दिस देयर्स टू मच इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड फॉर आवर ब्रेन टू process, so we are forced to filter it. If we do not, we go nuts, and in that filtering process we develop a shortcut to raise the uh, cognitive load of making decisions. These shortcuts are called heuristic. heuristic heuristic मीन होता है जैसे अनुमान लगाना। हाँ, अनुमान लगाने बोला था उन्होंने। ह्यूरिटिक है, ह्यूरिटिक। एक बार तुम्हें मैं सुना भी दूं, मैं भी एक बार कंफर्म कर लूँ ना, यही है। कहाँ गया? ह्यूरिटिक लिखना ही पड़ेगा। ह्यूरिटिक ह्यूरिटिक ह्यूरिस्टिक है सच। हाँ, ह्यूरिस्टिक। ह्यू बोल। ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक का मतलब है अनुमान लगाना। ह्यूरिस्टिक का मतलब है सीधा समस्या। देखो क्या लिखा है, ह्यूरिस्टिक मीनिंग किसी समस्या का समाधान खोजने का एक तरीका है जिसमें उत्पत्तित प्राचीन ग्रीस शब्द ह्यूरिस्टिक से हुई है, जिसका अर्थ है ढूंढना। बस समझो, खोजना। चलो, ह्यूरिस्टिक। These shortcuts are called heuristic. A heuristic is a strategy we derived from previous experience with a similar problem. One heuristic that everyone know is trial and error। यार पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, बहुत ब्रेन पता नहीं क्या कर रहा है। पढ़ ले भाई, तभी तो इंग्लिश अच्छी होगी, तभी मार्क आएंगे अच्छे। मार्क्स। One heuristic that everyone know is a trial and error, a strategy from a finding answer to problem we face. It's also a way of thinking, but trial and error is not always the most practical strategy. If we would really on trial and error to build a career, we would probably die before achieving that goal. Life is short for applying trial and error to everything. Sorry, not everything, everything. Thing. Another heuristic, hu, hu, ho, heuristic that's not a practical is socially proof. We often make decisions based on what others do or say. And my favorite heuristic is familiarity. मुझे देखो, मैं आई से दैट ना, दोज वर्ड आई स्पीक वेरी वेल, बट व्हेन आई मेक अ वीडियो आई रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड आई कांट स्पीक दोज वर्ड। माई माइंड फोकेट आई व्हाट डूइंग माई माइंड एक्चुअली। फैमिली सिमिलैरिटी होता है वैसे, फेमिलैरिटी वही होगा। सिमिलैरिटी होता है ना, जैसे सिमिलैरिटी वैसे Familiarity, it's say that past behavior that lead to good result is not a gra- granted grant यार दोनों बार देखते हैं ऐसे तो ये माइंड ना दिमाग चाट जाएगा। Familiarity भी देखते हैं।
फैमिलिटी यार वो स्पीकिंग का ही नहीं आ रहा, देखो ये स्पीकिंग वाला ही नहीं आ रहा, आ गया फेमिलियरिटी फेमिलियर Familiarity. फैमिल Familiarity. familiarity familiarity Familiarity. familiarity 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 Familiarity. familiarity Familiarity. 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 familiarity 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 Familiarity. familiarity 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 गारंटी आ गया भाई, गारंटी तो आ गया यार, guarantee for a future result. The familiarity heuristic also explain why favorite thing and place we know are novelty. It's one of those things we see every day. We eat the same thing, we walk the same routine, we walk the same routine, we make the same mistake, and we complete the same task at the work over and over again, and then we complain that our live are stuck or boring. No wondering you are making decision based on familiarity, but who say the familiarity is always a good thing? It's good for sustainly, but to achieve a breakthrough you need something different. Making decision based on hu- hu- heuristic technique might raise that cognitive load, but they are far from a practical, and often heuristic lead to unsatisfied outcome. If that's the case, take it as a sign that you must change something. Instead of instead of lying railing on heuristic. ये देखो heuristic to filter information and make decision. really railing है, railing था उधर, इधर really। यार एक बार कंफर्म करते हैं क्या है। रेली होगा मेरे हिसाब से, रेली, Rely. सॉरी रिलाई, Rely. रिलाई, सॉरी मैं रेली पढ़ी जा रही हूँ। Replying. रिप्लाई, यार देखो ये रिप्लाइंग instead of replying on heuristic to filter information and make decision. Rely on the main idea of pragmatism. True is what work, but do not take it too literally. Taking drug work for me is what a contentious friend told me after I shared this idea with him. And he writes, you can not take this idea too literally, but what can you take a literally in life? Take the pal- platitude, a good thing come to those who wait. For example, I do not have to explain that it does not mean you should sit at a home and wait forever until good thing happen. Good
Look at the true is what work. Idea as a filter that you can apply to all the information that goes into your brain. ये एक और आ गया है, इसमें लिखा है all the knowledge in the world. Filter knowledge that impact your habit. When faced with the decision, I ask myself, uh, will the will the outcome of a decision change the way I live? If you ask that yourself consistently, you will find that you automatic filter out useless information and only make decisions that have an actual impact on the outcome of your life. You force yourself to use whatever work, what's useful and what impact your habit. For example, conventional conventional thinking say that bigger cities cities also bring you bigger opportunity. I really thought that was true. That even the main reason I moved to London, and yes, I did seize a big opportunity for me at the time. But I also had a bigger responsibility and problems. Also, I do not like big cities. I hate crowded places, dirty air, and unreasonable high cost of living. Clarity living in a big city do not work for me. That's why of thinking had a negative impact on the way I live. That's why I eventually moved back to Lee Warden. It's quite. I know a lot of people here. I can work less, make more, and I can drive anywhere in the city with 10 minutes. However, I also realize that for most people, my way of living does not work. They might find it boring or not exciting enough. So what work for you? भाई एज ख़त्म कर लिया भाई, पढ़ा ही नहीं जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था। एक तो एक मैं बात बताऊँ, जो भी मैं पढ़ती हूँ मुझे कुछ समझ नहीं लगता क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और मुझे इंग्लिश, मेरे माइंड जो होता है उसे इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता, पर कुछ वर्ड है जो मुझे समझ ही नहीं आते, मुझसे प्रोनाउंस में कोई ना परावा। कहते हैं 6 महीने 1 साल में तो अच्छा बोलोगे ही बोलोगे। अभी शुरुआत है यार, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं कॉलेज जाऊँगी मैं वीडियो कैसे बनाऊँगी अपने लिए इंग्लिश सीखने के लिए। कोई नहीं, देख खुद बनाऊंगी ज़रूर, कितनी भी मुश्किल हो। वीडियो नहीं छोड़ूंगी, राइटिंग करना नहीं छोड़ूंगी, और स्पीकिंग प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ूंगी। कितना भी टफ टाइम हो भाई, ये नहीं करनी, ये तो पक्का सीखनी। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, really important. I face a lot of problem because of English. In the future also I face in a problem if I can't learn now. That's my time to learn. I'm wasting a lot of time on scrolling reel. You know that I go college and come back, I not make a video quickly, so that quickly I'm scrolling reels, so that my head also pin. You know, when I see reels and um watching mobile, my head is paining. Using a headphone on a loud volume is really headache on my brain. Okay, bye. Meet tomorrow. Thank you for myself. Thank you for myself. I complete the 10 day to read a book, a straight thinking. I never think that I can do it for a one day. I think I will be next day and we will bored and cut down of the video. I will start to watching reels, YouTube, wasting my time on shitty things. बाय बाय बाय, ज़्यादा नहीं बोलना भरावा, नेक्स्ट वीडियो में भी बोल